हेलो एवरीवन। नेक्स्ट पार्ट में आपका वेलकम। इस पार्ट में हम लोग कोडिंग एंड से चीज़ों को कंप्लीट करेंगे एंड आई होप सो कि इसमें हम अपना ये कंट्रोलर बेसिक जो उसका बेस वेरिएंट है उसको कंप्लीट कर सकें। सबसे पहले हम इस स्क्रिप्ट को ओपन करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में बनाई थी। ओके, विजुअल स्टूडियो ओपन हो चुका है एंड वी विल एडिट द स्क्रिप्ट. First of all, we have to add some references for our UI elements which we created in our last video. So उन references के लिए हम यहाँ पे भी UI elements के लिए हम यहाँ पे reference बनाएंगे. So I would prefer public references. Mostly आप public references ना भी दें तो private से भी काम चल जाएगा क्योंकि we have serialized field attribute for that. Okay, I will add private. First of all, हम लोग यहाँ पे एक चीज़ ऐड करते हैं. मैं मोस्टली रीजन्स बना के काम करना पसंद करता हूँ. ऐसे रीजन, add a region and I would say loading screen logic. मेरे हिसाब से ये पैटर्न ज़्यादा मज़े का है इस तरह इसको फॉलो करना क्योंकि रीजन्स में ही आप उस रीजन के रिलेटेड तमाम चीज़ें फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज़ वहीं पे रखते हैं आप. सो आई विल ऐड अ प्राइवेट वेरिएबल ऑफ टाइप गेम ऑब्जेक्ट एंड दैट वुड बी लोडिंग स्क्रीन मेन्यू और लोडिंग मेन्यू सिंपली. देन serialized field को मैं कॉपी कर लूँगा क्योंकि मुझे ये बार बार लिखना पड़ेगा. Okay, I would add another. Okay, I would have a tmp text, tmp underscore. Okay, I would need to add using tmp namespace reference using tmp and इसके बाद मैं ऐड करूँगा अपना रेफरेंस फॉर द टेक्स्ट और लोडिंग टेक्स्ट से ज़रूरत नहीं है बट वी कैन ऐड tmp टेक्स्ट लोडिंग txt. ओके, और उसके बाद हमें रेफरेंस चाहिए field private. serialized field actually इसको serialize करता है to be viewed and used in inspector publicly, but script के बाहर इसको जो आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये field private है, but unity inspector में ये चीज़ visible रहेगी. That's why we use serialized field attribute. So अब हम करेंगे slider. For slider we would have we control dot press करें और using unity engine dot ui elements. So आप ui simply ऐड करेंगे तो आप slider ऐड कर सकेंगे. तो I would say it as loading bar. So that would be the slider जो कि move करेगा. Then I would add another private value for I think I don't need the time value for timer क्योंकि मैं हमेशा हम जो फंक्शन लिखेंगे उस फंक्शन में हम लोडिंग स्क्रीन को बकायदा टाइम देंगे. इतने टाइम के लिए लोडिंग स्क्रीन चलेगी. सबसे पहले हम ऐड करेंगे स्टार्ट लोडिंग का फंक्शन. दैट वुड बी पब्लिक फंक्शन चूँकि मुझे okay, sorry, I think I forgot a major thing here. सबसे पहले मुझे ऐड करना था वो ये होना चाहिए था. actually I forgot, my bad.
एंड सबसे पहले जो है सिंगलटन सिंगलटन इंस्टेंशिएशन। तो सबसे पहले हम इस क्लास का एक सिंगलटन ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हम कहेंगे पब्लिक स्टैटिक, would use static give reference for that. Static variable would be of the same class UI controller and its name would be UI. Then हम ऐड करेंगे awake का फंक्शन और उसके अंदर हम लोग लिखेंगे if इंस्टेंस। एक्चुअली सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न में ये होता है कि अगर एक क्लास का एक इंस्टेंस है तो उसका दूसरा इंस्टेंस क्रिएट नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग दिस कोड नाउ। UI destroy game object। एल्स में हम लोग कहेंगे कि अगर UI असाइन नहीं है तो और simply just reverse it equal to null and we will add UI equal to this and add the don't destroy on load attribute of this and else में हम इसको destroy कर सकते हैं। ओके सिंपल। सो ये हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर मेरा स्टैटिक वेरिएबल जो है वो या मेरा सिंगलटन इंस्टेंस अवेलेबल ऑलरेडी है तो मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा किसी भी दूसरी स्क्रिप्ट को जो ट्राई करेगी नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। नहीं तो मैं इसी उसको असाइन कर दूंगा इस इंस्टेंस में। सो सिंपली ये स्टैटिक इंस्टेंस पब्लिकली अवेलेबल होगा और हमें इसका रेफरेंस नहीं लेना पड़ेगा स्क्रिप्ट का कहीं भी। सो वी विल ऐड इट एंड वी विल कंटिन्यू विद आवर लोडिंग स्क्रीन लॉजिक। ओके दैट स्टार्ट लोडिंग। सो ये मेरा फंक्शन होगा जिसका मैं नाम रखा है स्टार्ट लोडिंग। ओके एंड स्टार्ट लोडिंग में हम करेंगे सबसे पहले लोडिंग स्क्रीन डॉट सेट एक्टिव ट्रू। इन मोस्ट केसेस लोडिंग स्क्रीन मेन्यू डिसेबल्ड होगा तो इसको सबसे पहले हमने इनेबल करना है। then there will be we will start loading। okay I think I need to add another private variable of type float and that would be our loading timer is equal to 2f। ओके फ्लोट वेरिएबल्स के साथ आपको f लिखना पड़ता है C# रूल्स एंड उसके बाद हम we will add a core routine actually and start core routine और core routine हमारी होगी loading CR loading underscore CR and control dot and we will create another function and make it I enumerator। so ये कोरिन होगी और इसमें yield the new actually हम waiting state ऐड करेंगे इसमें। so we'll add first of all we need to check okay there are few things। सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि स्लाइडर की वैल्यू क्या है। सो स्लाइडर डॉट वैल्यू सॉरी लोडिंग बार
dot value should be equal to timer, and okay, it shouldn't be equal to timer, it should be equal to 0. एंड उसके बाद हम चेक ऐड करेंगे if while we will add a loop here while loading bar dot value is less than loading timer, और बेटर वर्जन ये है कि हम लोडिंग डॉट मैक्स वैल्यू करते हैं. सो मैक्स वैल्यू से कम है तो वाइल लूप में हम रहेंगे, वरना बाहर आ जाएंगे. सो विल ऐड लोडिंग बार डॉट वैल्यू should be plus equals 0.05f. Okay, and we will need to create another variable, and that would be let's say add time. Okay, यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे 0.05f. So I would use it here at time. एक्चुअली यहाँ पे एक और लाइन आएगी, और मैं एक्चुअली अपने स्लाइडर की मैक्स वैल्यू जो है वो मैं सेट करूँगा इक्वल टू लोडिंग टाइमर. सो लोडिंग टाइमर की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से आएगी. लेवल, सो मैं इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0f लगा देता हूँ, और 2.0f. ओके, दैट वुड बी नाइस. सो अब हम दैट वैल्यू शुड बी लोडिंग टाइमर is equal to load time. And then we will add a wait of end of frame simply. I forgot to add some semicolon here. So ये तब तक वेट करेगा जब तक ऐड नहीं हो जाता, और जब ऐड हो जाएगा then it will just turn off the loading screen menu. So मेरी कोशिश है कि हम लोग इसको दोबारा से रीसेट कर दें. Great. So I think we shouldn't do it really, because एक्चुअली हम लोग से तो आउट हो चुके हैं, बट फिर भी हम कोर रूटीन जो है उसको
तो एग्जिट कर जाएंगे इसको हमसे। So let's start and see what happens. इसके अलावा हमें यहाँ पे स्टार्ट लॉजिक पे लिखना पड़ेगा, स्टार्ट एंड अपडेट logic of funcs. So we will add a start function here, excuse me for that, and यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे हमारा एक्चुअली पब्लिक मेथड एंड वी स्टार्ट लोडिंग। So we will add references, and the reference for our loading screen would be here, and there goes the slider. So let's play it. Great. So ये था हमारा लोडिंग स्क्रीन कंट्रोलर। इसमें चूँकि टाइम हमने काफ़ी कम दिया था, दैट्स वाई बहुत जल्दी ऑफ हो गया। अगर मैं यहाँ पे 5 सेकंड्स का टाइम देता हूँ तो ये 5 सेकंड्स कह लें चलेगा, 5 सेकंड तो नहीं, बट ये कि उसकी वैल्यू 5 हो जाएगी और जब मे बी फ्यू मोर सेकंड्स चलेगी। So I would suggest keep it low because on mobile devices इसकी performance जो है वो थोड़ी स्लो होती है। We will look into it in our future videos. So I hope कि अभी जो loading screen controller है उसका पार्ट मैं यहीं पे एंड कर दूँ एंड देन न्यू वीडियो स्टार्ट करें। इसमें हम लोग our main menu के बटन्स ऐड करेंगे एंड अनदर लॉजिक ऐड करेंगे। So I hope most of people, our students, will understand this video. So अगर कोई भी मसला हो, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का हो इस वीडियो के मतलब, तो आप कमेंट्स में ऐड कर सकते हैं। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।